Good morning, students. Today we will be starting Class 8 NCERT Political Science, Chapter 1, the Indian Constitution. In the starting of the chapter, it is given an example of a football game. But before going through the chapter, I want to clear you the main topic of this chapter. The main topic is why do we need a constitution? What is constitution? And the second topic is pillars of the constitution or the key features of constitution, fundamental rights, etc. And the third point is importance and role of constitution in a democracy. So in this chapter we are going to begin a football a game many of you probably heard of or even played. As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. According to the rules of a football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. So, if players start holding the football in their hand and passing it around, then they are not playing football anymore. Similarly, other games such as hockey or cricket also have some rules according to which they have played. Each of these rules help us define the game and help us distinguish one game from another. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. Like these games, our society also has consecutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus. And in modern countries, like consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rule is called a constitution. So, student, it is clear that just like a game, either it is football or cricket or volleyball, anyone, there are certain rules. रूल्स डिसाइड करते हैं कि वो गेम्स कैसे हैं. जैसे हमने देखा कि अलग अलग गेम्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, इसी तरह से एक सोसाइटी के लिए रूल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. रूल्स जो है वो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं अदर सोसाइटीज़ से और ये भी बताते हैं वो किस तरह की सोसाइटी है, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज़ इट. एंड इट इज़ ऑल्सो very important for a communities of people living together in a big society. So these all rules, when it is written in a when it is formulated in a written form, it is called a constitution. Look at the last line. A written document in which we find such rule is called a constitution. Now there are question arises, what is constitution and why do we need a constitution? So look at further. We have looked the Indian constitution in class 6 or 7 in our social and political life textbook. Have you ever wondered why we need a constitution or being curious about how the constitution got written or who wrote it? बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे आपके माइंड में कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना, किसने बनाया. ये सारे क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में फर्दर डिस्कस करेंगे. एंड वी ऑल्सो डिस्कस द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Because Indian constitution has a crucial role to working of a democracy in India, and some of these will be focus of different chapters in this book. अलग अलग chapters में हम इसके roles आगे पढ़ते जाएंगे. Now the first topic is why does a country need a constitution? एक country को constitution क्यों चाहिए होता है? Today most countries in the world have a constitution. आज वर्ल्ड में हर एक कंट्री, बहुत सारे मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक हो चुकी हैं और हर एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं. वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज़ दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पस. स्टूडेंट, लुक एट दिस लाइन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी क्लियर दिस लाइन. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन होती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिन भी कंट्रीज़ के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हो. सो इज़ इट क्लियर? All democratic countries are likely to have a constitution, but it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है, बट ये ज़रूरी नहीं कि जो भी कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो. नाउ गो अहेड. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पसेस देखेंगे. First purpose है, it lays out certain ideas that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. First क्या है पर्पस?
कॉन्स्टिट्यूशन की कि हम इस कंट्रीज़ में जिस भी कंट्री में रहते हैं वहाँ के सिटीजन्स कैसे हैं, मतलब सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम आउट की जाती है। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इज। अदर वे में हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल नेचर जो है सोसाइटी की वो डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन, वो बताती है कि सोसाइटी का नेचर कैसा है, वहाँ की सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। A country is usually made up of different communities of people who share certain belief but may not necessarily agree on all issues. जैसे कि हम जानते हैं, just like India, a diverse country, there are many communities living here, but it is not necessary that all are agree in the same issues. Our constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of way in which we want the country to be governed. This includes not only the type of government but also all agreement on certain ideas that they all believe the country should uphold. कॉन्स्टिट्यूशन जो है यही हमको सेट करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, ताकि जस्ट लाइक अ डाइवर्स कंट्री, एक बिग कंट्री में सारे लोग जो अदर कम्युनिटीज़ के हैं सब मिलकर एक चीज़ को फॉलो करें और हम अपने देश को, अपने कंट्री को अच्छे से गवर्न कर सकें। नाउ लेट